Hello everyone, good morning to all of you. Hello dear students, good morning. Welcome to Mathura Commerce classes. You know that this institute provides commerce, English and arts education. Okay, so let's take English grammar. In English grammar today I will teach. Okay, today I will teach preposition. Okay. तो let us take preposition. Okay, everybody. Preposition. So you know already about preposition, but in this 12th class we have to go in deep. Okay, हम लोग को गहराई में जाना पड़ेगा preposition के लिए. हम लोग ने 7th में 8th में क्या 9th 10th preposition को पढ़ा, बट यहाँ पर 11th 12th में जो इंटरमीडिएट का इंग्लिश सिलेबस है वहाँ पर टाइम एंड टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, ठीक है, नरेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब अधिक से अधिक आता है. प्रीपोजिशन ऑल्सो, आर्टिकल्स, ये सब अधिक से अधिक आता है. तो इसलिए आई टॉट टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, कॉम्बिनेशन, आर्टिकल, बट आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टीच टुडे आई एम गोइंग टू टीच प्रीपोजिशन. सो let us take and see. Preposition. Do you know definition of preposition? Let us take once again. The preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. Okay, so this is definition of preposition. Okay, let's take example. So there is a cow in the field. Okay, number one, he is fond of tea. And third, the cat jumped over the chair. The cat jumped over the chair. There is a cow in the field and he is fond of tea. The cat jumped off the chair. So in this there are three examples. So in this sentence in this sentence of, in this sentence this is also of, but ये double F है, O double F, ये single O F. Okay, तो explanation of three sentences. Okay, तो I will explain. I am going to explain the word in. जैसे कि यहाँ पर ये in है, तो the word in shows the relation between two things. Cow and field. Cow and field. Okay. And in sentence 2 of, the word of shows the relation between the attribute expressed by the adjective fond and tea. Fond and tea. In sentence 3, the word of shows the relation between the action expressed by the verb jump over the chair. Jump over the chair. Okay. तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया आपका, बट आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत है मुझे. तो द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स दैट विच प्लेस्ड बिफोर. दैट विच प्लेस्ड बिफोर. ओके, एंड इट विल बी नोटिस दैट. It will be noticed that in sentence 1 the preposition joins noun to another noun. So we have to see in example 1, so there is a cow in the field. मतलब एक गाय कहाँ है? एक गाय यानी खेत में है. खेत को है फील्ड में, खेत या मैदान बोल सकते हैं. मैदान में एक गाय है या एक गाय मैदान में है, आप बोल सकते हैं ऐसे. He is fond of tea. तो यहां पर देखिए in, तो cow and field. तो cow also noun. Okay, cow is noun and field is also noun. And here, so we have to say here in sentence 1 the preposition joins noun to another noun. Okay, यहाँ preposition ये word है जो join किए हैं दो noun को, एक noun से दूसरे noun को. Okay, तो यहाँ पर मैं बोला हूं the word in shows the relation between two things, cow and field. And here also
the preposition joins noun to another noun, and a noun to an adjective, and a noun to a verb. So in these examples, okay. So he is fond of tea. So fond is, fond is what? Adjective. But tea is noun. So here in sentence again, the preposition joins a noun to an adjective. Noun to an adjective. And after that, in sentence third, the preposition joins a noun to a verb. The preposition joins a noun to a verb. Noun is here and verb joined. ओके तो ये आपका क्या था? एक्सप्लेनेशन था 3 एग्जांपल्स का, प्रीपोजिशन का. आप लोग प्रीपोजिशन का डिफिनेशन भी नोट कर लेंगे और इस सेंटेंस को मैं क्लियर कर दिया. ओके विथ एक्सप्लेनेशन. तो ये इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन है. पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 सेकेंड वीडियो फिर नेक्स्ट डे बनाएंगे. आप लोग इसको देखेंगे, इसको राइट भी कर लेंगे. तो दिस इज टू इजी प्रीपोजिशन, but we have to understand only. We have to understand. So guys, you have to note it in your notebook and memorized. Okay. Thank you. This much for today.